Good morning students. Today we are going to start with advertisement writing. We have already done advertisement writing before. मैंने आपको बता दिया है कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है और मैंने दो उसके फॉर्मेट भी अपन ने किए थे. अब अपने आगे करेंगे. मैंने आपको बताया था कि एडवर्टाइजमेंट मोस्टली अपन 6 टाइप के करते हैं. उसमें से वन इज़ टू लेट, वन इज सिचुएशन वेकेंट, एक है सेल्स परचेज ऑफ प्रॉपर्टी एसेट्स, एक है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, एक है टूर्स एंड ट्रैवल, मिसिंग पर्सन, लॉस्ट एंड फाउंड, मैट्रिमोनियल अलायंस. ये सब है ना उसके एडवर्टीजमेंट्स होते हैं. हम लोगों ने पहले अपने स्लाइड में वहाँ अपन ने टू लेट और सिचुएशन वेकेंट किया था. अब हम आज फॉर्मेट देखेंगे sale purchase of property assets. Now see, in this when we start the ad, we should always start with sale purchase या wanted. We should give a brief description of the property, vehicle and goods. In case of property, we have to mention the number of floors, size, number of rooms, location and surroundings. In case of a vehicle, we have to mention the color, model, accessories, year, modification, जो भी उसमें हो, जो भी आपके features हो, that you have to show. For household goods, you have to mention the condition, the price offered or expected. Then format for educational institutions. When you are going to write advertisement for educational institutions, so you have to first write the name of the institution, you have to write what is the past record of the institution, क्या है उसका record, कौन कौन से courses और कौन कौन से duration offer करता है, which eligibility criteria is there, then the facilities that are provided, what is the fee structure, what are the information on scholarship, everything you have to write, and when is the last date to apply, and the contact number and address. Then comes your format for missing person. When a person is missing, you have to give the physical description like height, complexion, etc. You have to show the name, age and any health related issues, any identifying feature like clothes, accessories which you remember when that person is missing, जब वो घूम गया हो. Place where the person was last seen, सबसे लास्ट में आपने उस person को कहाँ देखा था. You have to mention the detail of the reward if there is any, कि अगर आप लोग कोई reward दे रहे हैं तो आपको जल्दी से कोई ना कोई बता देगा. And address and phone number. अब जो format of tours and travels, that you have to start with package available, कि वो लोग क्या पैकेज अवेलेबल कर रहे हैं. देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द ट्रेवल एजेंसी. आपको मेंशन करना है नाम ऑफ द डेस्टिनेशन, ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप. यू हैव टू ऑल्सो राइट द प्राइस एंड एनी स्पेशल डिस्काउंट्स इफ अवेलेबल, कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर. सो दैट इज़ द फॉर्मेट फॉर टूर्स एंड ट्रैवल्स. नाउ फॉर्मेट ऑफ द मिसिंग पर्सन, जिस तरह आप सब डिस्क्रिप्शन देंगे उसी तरह लॉस्ट और फाउंड में भी, अगर लॉस्ट और फाउंड में कोई चीज़ मिल गई हो, एनी पेट, एनी थिंग्स, पेट एनिमल्स और एनी अदर थिंग, तो उसमें भी सेम चलेगा जैसे मिसिंग पर्सन का है. नाउ लेट्स सी अ सैम्पल फॉर परचेज. यू वांट टू परचेज अ फ्लैट इन आनंद विहार. जब यहाँ परचेज है तो आप परचेज का लिखेंगे. सेल होगा तो सेल का भी लिख सकते हैं आप. Write an advertisement not more than 50 words. So when you are going to write, you have to put it in a box as I had told you before the tips. उसके बाद आप लिखेंगे for purchase, the top. And always remember, जो heading होगी that should always be in capital letter and in the middle of your box. For purchase, a max flat in Anand Vihar with 2 bedrooms, attached bathroom, means जो आपको चाहिए. When you are purchasing, you have to write everything. कि प्राइस कितना आप ऑफ़र कर सकते हैं, हाउ मच यू कैन गिव, एवरीथिंग यू हैव टू राइट, और आपको क्या क्या चाहिए उस मकान में. व्हेन इट कम्स फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इट इज़ दैट यू हैव टू ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट वेयर यू आर अनाउंसिंग एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट्स. सो इट इज़ रिटन MRIU Faridabad is offering admission in various
Undergraduate courses like BTech, BSc, LLB, etc. Eligibility class 12th passed. आपको eligibility class लिखनी पड़ेगी. You will have to write the course fee in this. Then you have to write अगर आपको दूसरी facilities दे रहे हो like research labs, अगर आप hostel available दे रहे हो. Last date to submit the application form you have to write 17th March. Contact assistant secretary. वो आप date अपने हिसाब से रखेंगे. So that is where you have to write. When it comes to a missing person, now here is that his younger brother has been lost, he is missing. So they have put a advertisement in the missing persons. Now where you have to write missing since 24 June, Sahil, a young boy 15 years old, of height 145 centimeters, he has fair complexion, brown eyes, medium cut hair. When he was missing, he was wearing a blue shirt and black pants. If any information about the whereabouts, kindly contact at phone this and their address is given. So you must have now understood how we have to write our advertisements. एक और sample बता रही हूँ, that is of lost and found. That I have lost my XYZ brown color briefcase with A written near the handle while traveling by DTC bus route number 167 from Narendra Nagar to Connaught Place. There are some valuable documents of mine like my senior secondary pass certificate. Finder will be rewarded. If found, kindly contact. अगर found है, lost है तो इस तरह लिखना है. अगर found है तो आपको I have found a briefcase और उसका जो भी है ना description है that you will have to mention. Then your last sample, that is of tours and travels. In tours and travels, you have to write in the middle tours and travels, and then you have to start with attractive package. Attractive package available for Mauritius, 3 nights 4 days. Breakfast and dinner, stay at 3-star hotel, sightseeing including 10,000 per person, special discount for early birds, means those who are going to apply first, they will get special discount, contact, and then the address is written. So I hope all of you all have understood how to do advertisement writing, and you must have understood I have showed you the samples, the formats. Okay, so we end with our advertisement writing today.